how difficult or easy it was to become Manoj Bajpayee what it is today. This industry has never been welcoming to a newcomer. Last 2.5 days I spent understanding the character of Umesh Pillai and Prabhakar. Yeah. On one hand, the gentleman who is screaming at the top of the voice, then गाली अभी भी बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं. Two female leads you have worked twice. Kongana in Killer Soap is fabulous. फिर वो एक kissing का scene है, बड़ा intense scene है. And Which is the most inexpensive item and the expensive item at your possession? कितना difficult था कि blockbuster production houses को दूर रखना, चाहे वो जोहर्स हो या चोपड़ाज हो. से बनाने वाला कोई काबिल डायरेक्टर हो. पर्सनल लाइफ आपकी बड़ी एक मैं कहूँगा रहस्य है. रहस्य. Manoj Bajpayee likes to wear floral printed shirts. That I feel that caste census today requires Mr. Bajpayee more debate than just the policy implementation. आपने मुझे ना चौका मार दिया अभी. मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ. क्या है कि राज के आप हंसते बड़ा खुल के हैं. मैं जैसा भी दिखूंगा हंसता हुआ दिखूंगा. Identifies him as a persistent salesman in the late 90s when he knocked at the doors of a young demure-looking Urmila Matondkar to shouting on the rooftop announcing himself as King of Mumbai, Bhikhu Matre. मुंबई का किंग कौन? भिखू मात्रे. This gentleman has had unrivaled and unparalleled success on the cinema and also latestly on the OTT. It's his latest series, Killer Soup, that has made giant waves across this country. He's none other than Padma Shri Manoj Bajpayee, bringing face to face with what his stellar career has been over the last 2.5 decades or so. Welcome to the show, Mr. Bajpayee. I want to congratulate you for a stellar, incredible career that you have had over the 30 years. It's not an easy feat to scale the heights what you did, having come from the small town of Bihar, which you're not ashamed of, and you actually discuss this very openly and publicly, the inhibitions that you had to shed to become what you are today and to conquer Mumbai and make it yours. How difficult or easy it was to become Manoj Bajpayee what it is today? Well, not only me. First of all, I must, add disclaimer to it. Not only me, everyone goes through it, and I would not like to glorify my struggle. But having said that, I must add that there is no step which is not difficult if you are coming from outside or you're new to the industry. First, the struggle is to find something, find some place, some money to feed yourself, to have some roof above your head, and then find work. And if you're not finding work, how to survive in this big wide world? Even if you have a belief and conviction about yourself, about your ability, it is not easy if you are coming from a lower middle class, farmer's family. The only thing I could rely upon was my experience in theatre and the craft that I have learned over the years. And then even after Satya, Bhikhu Matre, things never been easy because it's not very welcoming. This industry has never been welcoming to a newcomer. And the people in position, they were always feeling insecure. So to overcome all of this, the only thing that comes handy to you is your conviction and fierceness. Right. Since I have come from a village, I have come from a Bihar and village. The fierceness was something that I've always had in abundance. I think this stubbornness in me, never say die attitude, and I think I really thank God in the end. I thank my mother for giving me that kind of a never surrender attitude in the face of an obstacle. Right. That I have survived for this long. Right. And
And now it's 30 years. When you were just introducing me, I suddenly realized, yeah, it's 30 years, man. It's 30 years. Which is why I must tell you that last 2.5 days I spent understanding the character of Umesh Pillai and Prabhakar. Yeah. I actually spent 2.5 days before this interview came, the opportunity to meet you in flesh. And for a conversation that I had with myself, I was pleasantly taken aback that for a man to do a double role in this, on one hand, the gentleman who is screaming at the top of the voice, and हाँ हाँ गालियाँ and हाँ एक वो एक आदमी है जो नास्टी है, वो एक आदमी correct, है जो अपनी पत्नी को जूते के समान समझता है, एक आदमी है जो जिंदगी में हारा हुआ आदमी, और वो सारा दोष जो है अपने परिवार पर देता है, और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया है, उस तरह का आदमी है। और दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी है जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन उसके अंदर में काबिलियत नहीं है, right, और वो रोमांटिक है, वो इस औरत को बहुत ज्यादा प्यार करता है। correct. He may have a squint in his eye. It doesn't matter. Right, You know, when Swati finds him beautiful. right. So it's always never about the squint or the limp. It's always about the person that you are interacting with. Hmm. For me, as a journalist, to enjoy from the fringes sitting in the national capital, to see you bringing one blockbuster another, I still remember very vividly in my early days of college, seeing what you did in Satya and Right. Khan Right. repeatedly, to watch it on cable television at that time, because Right. we only had VCRs and still the good cinema halls were very few and far between. Right. PVR was just erupting in Delhi. I know. Mr. Bijli had just Yeah. brought a ₹10 ticket Right. culture to Vasant Vihar. मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूँ उस पत्रकार की हैसियत से भी कि जिस मुकाम पे आज आप जिस दर्जे पे पहुंचे हैं, कौन से लेके राजनीति तक, स्पेशल 26 तक, आपने वो रोल अदा करके दिखा दिए जो शायद ही खान्स या कुमार्स वहां तक पहुंच पाते। लेकिन कितना डिफिकल्ट था कि ब्लॉकबस्टर मूवीज या ब्लॉकबस्टर प्रोडक्शन हाउसेस को दूर रखना, चाहे वो जौहर्स हों या चोपड़ाज हों या कोई भी और हो। और मैं अनुराग कश्यप के साथ में और उन प्रकाश झा के साथ में जाके ये स्टेलर सक्सेस जना, ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मेरे को उससे दूर रहना है और इन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ में काम करना? सी मुझे मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी कि मैं करना क्या चाहता, या मैं किसी बिग स्टार बिग प्रोडक्शन में जा करके एक छोटा सा रोल करूं, या कोई विलन का रोल करूं, या फिर मैं वो कहानी और वो किरदार ढूंढूं जहाँ पे उस किरदार की अहमियत हो और उस कहानी की अहमियत हो और उसे बनाने वाला कोई काबिल डायरेक्टर हो। तो मेरे लिए रास्ता चुनना बड़ा आसान हो गया था, मैं सच में बताऊं, क्योंकि जो भी मुझे बिग प्रोडक्शन हाउसेस से जो ऑफर हो रहे थे वो एक विलन के किरदार, और कभी इसमें सुपरस्टार से वो पिटता है, कभी दूसरे फिल्म में किसी दूसरे सुपरस्टार पीटेगा उसको, तो मुझे लगा कि यार व्हाई आई एम हियर, मैं इस शहर में हूँ क्यों। एंड बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यार मैं यहाँ पर अपने सपने को पूरा करने आया हूँ, मैं किसी दूसरे के सपने को पूरा करने नहीं आया हूँ। राइट। तो जिस तरह से वो मुझे देख रहे हैं, मैं उस तरह से तो मैं देखता ही नहीं हूँ अपने आप को। मैं अपने आप को एक पूरे एबल एक्सपीरियंस एक्टर के तौर पे देखता हूँ। राइट। तो मैं वही करूँगा जिसमें मुझे डिग्निटी लगेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी कायम रहेगी जिसमें, और जो मेरा सपना है वो उसको पूरा करेगा। ये बड़ी क्लियर था। मैं जब क्लैरिटी आ गई, देन आई ओनली चेज दैट, राइट, विद नो मैलिस अगेंस्ट एनीबॉडी, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में क्या है कि कोई भी ना आपको लेकर के सीरियस नहीं है। मैं आपको सच में बताऊं, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। वो अगर आपकी बुराई कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जो है कुछ और काम उस समय नहीं है किसी पार्टी में, तो आपकी बुराई कर रहा है। इनसिक्योरिटी है, अगर आप कहीं से उसके लिए खतरा बनेंगे तो उसको इनसिक्योरिटी होता है। लेकिन मुझसे तो खतरा ही नहीं था, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो मैं करना ही नहीं चाहता था। बिल्कुल। इसीलिए मैं बिग प्रोडक्शन हाउसेस से अलग रहा, क्योंकि उनके पास जो था वो मैं करना नहीं चाहता था। बड़ी सीधी बात थी। तो मुझे हमें हवाई जहाज से उतर के मैंशंस के सामने, ट्रीज के सामने गाने नहीं गाने थे, हमें भीखू मात्रे रॉक पे बन के गाना था, या कहानी इंस्पेक्टर समर प्रताप बनना मंजूर था। जी, मुझे अच्छी कहानी, एक ऐसी कहानी जो दुनिया ने ना देखी हो, इस हिंदुस्तान के दर्शक ने ना देखा हो, एक अच्छा डायरेक्टर जो मेरे काबिलियत को जो है आगे लेके जाए,
एक अच्छी कहानी जो जो मेरे फिल्मोग्राफी में चार चांद लगा दे। करेक्ट। मैं इस तरह की चीज़ें ढूंढ रहा था। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। हमारी इंडस्ट्री जो है थोड़ी बॉक्स ऑफिस ओरिएंटेड है, राइट। थोड़ी नहीं ज़्यादा। तो अगर आपकी कोई फिल्म नहीं चली, थिएटर में लग रही है, लगातार 3-4 नहीं चलती है, तो फिर आपको काम देना बंद कर देते हैं, चाहे भले ही आप कितने भी काबिल क्यों ना। करेक्ट। तो ये संघर्ष का सिलसिला लगातार चलता रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे, म- मुझे परिस्थिति और मनुष्य कभी डराते नहीं हैं। जी। मैं भगवान से डरता हूँ, उसके अलावा मैं किसी चीज से नहीं डरता। एक No, which is fabulous and commendable. या I mean, to be intrepid, to be brave, and to be fearless. For us journalists also, we must inculcate this habit. Unless we become fearless and bring the accountability of the government, we should cease to be a journalist. We should cease to exist. एक पत्रकार की हैसियत से भी जी हमें, तो मुझे एक बड़ा आप पे नाज भी है और आज फक्र भी है कि आप उस मिट्टी से निकले हैं और इस मिट्टी के बने हैं कि जो फियरलेस भी है और अपने कैरेक्टर को बरकरार भी रखते हैं जी। और सक्सेस को अपने हेड में आने नहीं देते। नहीं नहीं, वो उससे देखिए, मेरे लिए आध्यात्मिक सक्सेस और फेलियर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं और उम्र के भी उस मकाम पे हूँ, और मानसिक तौर पे भी उस आध्यात्मिक मकाम पे हूँ जहाँ पे मेरे लिए सफलता और असफलता मायने नहीं रखते। राइट। मुझे काम मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मैं लोगों को धन्यवाद देता हुआ चलता हूँ करेक्ट। कि वो मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। मेरे डायरेक्टर्स और मेरे को एक्टर्स को धन्यवाद देता हूँ जो कि मेरा बहुत सहयोग देते हैं, आदर करते हैं। और ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ कि वो मैं आज उस दौर में काम कर रहा हूँ जब ओटीटी है और उस समय भी रेलेवेंट हूँ। इसके लिए Absolutely. मैं भगवान को हमेशा धन्यवाद देता हूँ। Absolutely. So, which is, I mean, I wanted to understand from you that even in your personal life, you have been very discreet, very mellowed person, a family man that you are actually in the real life as well. कि आपने अपने बेटे को और अपनी वाइफ भी आपकी एक बड़ी एक पर्सनल लाइफ आपकी बड़ी एक मैं कहूँगा रहस्य है। एक रहस्य तो नहीं, बड़ी आइडियल है। नहीं, आइडियल नहीं। मेरी किसी की शादी और किसी का भी जीवन आदर्श नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मैं बिना जाने हुए किसी पति पत्नी को देख के कह सकता हूं कि संघर्ष बहुत होते होंगे। और वही तो उसकी सुंदरता है। जहाँ पे झगड़े ना हो फिर शादी कैसी भगवान है। राम में भी थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। तो इसलिए पूछा ये सवाल क्योंकि कई बार क्या होता है कि दैट द ऑफेंसिव लैंग्वेज और आल्सो द लूड एक्सप्रेशंस दैट वी यूज ऑन ओटीटी बिकम लिटिल टची। So, but I relished the conversation that you have had in some of the OTT because that brings the real life culture of the street urchins, which almost the 1/3 or the 1/10 of India lives in the villages, in the hinterlands, जहाँ पे ये भाषा होती है। और इस भाषा को अब शायद बुरा ना माना जाता हो, शुरू में ऑफेंसिव लगती है क्योंकि पहली बार स्क्रीन में देखी अभी जाती भी थी। बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं, सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे आकर के, एक्स पे आकर के लोग जो है कभी कभी बोल भी देते हैं। जैसे किलर सूप को लेकर के बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशन, तो वैसे उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन वो हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एक बात को लेके कि एक 18 ईयर्स एंड अबव लिखा हुआ है, कार्ड पे लिखा हुआ है, पढ़े लिखे लोगों के लिए लिखा हुआ है। वो पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं देखना है तो मत देखिए। करेक्ट। ये इससे संविधान तो ये अधिकार देता है। राइट। और और आप पढ़े लिखे हैं, आप मत देखिए, बच्चे को मत दिखाइए। मैं अपने करेक्ट। बच्चे को नहीं दिखा रहा हूँ, किलर सूप नहीं दिखा रहा हूँ उसको। उसने उसने मेरे बहुत सारी चीजें देखी हैं, सिर्फ एक बंदा काफी है देखी है। उसने जो है फैमिली मैन देखी अभी, जब उस उम्र की हो गई वो। लेकिन हम नहीं देखने देते। अपने बच्चे को आप मत दिखाइए। जो अब्यूसिव लैंग्वेज है, आप अपने समाज में घर से बाहर निकलते हुए ना अपने कान पे उंगली डालते हो, ना अपने बच्चे के कान पे उंगली डालते हो। जबकि मेरा मानना है कि गालियों का इस्तेमाल कम से कम करें तो ज्यादा बेहतर है। करेक्ट। मैं अपने पर भी बहुत कंट्रोल करता हूं, अपने राइट। बच्चे के सामने बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। और मैं अपने जीवन में भी उतनी गालियां नहीं देता। ये तो क्या है, रोल करते करते कभी कभी आदत पड़ जाती है, जो फिर मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। राइट। लेकिन मैं अपने गांव जाता हूँ, अपने छोटे शहर जाता हूँ, तो मैं लोगों को तो नहीं रोक पर सकता मैं ना। आपको बात बताऊं मनोज जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, देयर इज एक्चुअली अ रूलिंग एंड एन ऑब्जर्वेशन by sitting one of the sitting judges who was then
in High Court who observed that the Jawans and the army of personnel sitting on the border must be allowed to use Abusive abuses. life. Otherwise, how will they invoke the passion inside them? Right. And there was a petition moved against them that why should we not allow them to? मुझे क्या लगता है कि ये परिवार टू परिवार जो है इसको रहने देना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, मेरे घर में तो मतलब इतने सारे लोग गालियां दे, मतलब गांव में लोग गालियां देते हैं, दिल्ली में कितनी गालियां देते हैं हर लोग। कॉर्नर पे मुझे लगता है इंडिया गेट आप से किसी खान के मार्केट नहीं, से बंगाली आप मार्केट, किसी का कान तो बंद करते नहीं हो। आप फिल्म वालों पे जो है आप अपने गंडासे तलवार लेकर के भिड़े रहते हो यार। और फिल्म वाले, मैं सच में बताऊं, सब इसको सॉफ्ट पावर तो कहते हैं, लेकिन उतने ही सॉफ्ट लोग हैं। करेक्ट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत ही सॉफ्ट लोग हैं। एब्सोल्युटली। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस व्हिच ब्रिंग्स मी, आपने जिक्र किया दिल्ली का भी, if I look back at some of your strong characters and the movies like Shul or Rajniti, which actually bring the rural hinterland culture of this country, these films were focused on Bihar's so-called Jungle Raj. कई बार कॉइन कर दिया गया टर्म। आपके वो जब दिन बीते चाइल्डहुड से, तो आपको लगता है कि वो जंगल राज भी बदला और थोड़ा सुकून हो गया बिहार उन उस 80 और 70 के दशक से जब आप लोग वहाँ नहीं, थे? अभी तो बहुत अच्छा है। सड़कें बड़ी अच्छी हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। जब मैं अपने गांव से निकला था तो मुझे पूरे समझिए कि एक रात कहीं हॉल्ट लेना पड़ता था, फिर मुजफ्फरपुर पहुंचता था, फिर मैं रात को वहां रुक जाता था, फिर अगले दिन पटना पहुंचता था, फिर मैं स्टेशन पे इंतजार करता रहता था, जयंती जनता या मगध एक्सप्रेस जाती थी उस दौरान। अभी अब मैं गांव से निकलता हूँ, मैं 6 घंटे में पटना पहुंच जाता हूँ, 5.5 घंटे में पटना पहुंच जाता हूँ। You like to drive? No, I don't like to drive because I keep thinking. So I'm a person who is always very I'm always So on the always road, you have thinking to be about. completely attentive. And a driver has to be attentive. Right. So I prefer having a driver who's doing his job. Doing my own job, thinking about some character, thinking about some philosophy, thinking about God, thinking about all the questions that I have about life. Yeah. Right. Uh, which is why, I mean, the incredible career that you have had, you think so much that what was crossing your mind when you were being awarded Padma, or when that announcement came to you, the whisper that Mr. Bajpayee, you are going to be decorated and felicitated with the country's rich honor like Padma in 2019? What crossed your mind, since you are a thinker as well? Uh, in every time anything of this sort happens, and I say it's a miracle. You must go to my village to really understand the journey where I come from. It's a miracle. It's a miracle that all of this is happening to me. All of this has been happening to me. It's a miracle that the country knows my name. It's a miracle that a 10-year-old comes to me at the airport and tells me, "Uncle, I need a photograph with you." It's a miracle when air hostesses, they call me discreetly to their side and ask for and request for photographs. Correct. Every flight that I take. Right. It's a miracle, and it's a lot of gratefulness is there in me. Right. What I felt bad that when on the day of the Padma Shri, event, when Inside the Mr. Rashtrapati Bhavan. President was going to felicitate, my mother was in the hospital and she could not come because she was operated for cancer. Right. And my father and my wife, they accompanied me. I felt very proud that my father was sitting there, an old man. You could see that day. I felt very proud that my wife was there. But there was some kind of a sadness also there where my mother could not be there. She was battling an ailment. She was battling a cancer and she was in the hospital. She went through the surgery. For me, that was, so it was mixed emotion in me when all the dignitaries are sitting and clapping for each and every person who's getting felicitated. It was a big moment for me, big. And I really thank President of India to really Right. think of me as one of the awardees. Right. I'll just lighten up the conversation. When I look back at some of your characters, even in Swabhiman, Shobha Deke,
किताब और नरेशन पे बना हुआ स्वाभिमान बड़ा याद आता है मुझे। सुनील का वो एक कैरेक्टर डीडी पे 3:30 बजे आता ये था और मैं पेरेंट्स के साथ बैठ के वो देखा करता था। चाहे मैं मात्रे को देखूं, उमेश पिल्लई को देखूं, प्रभाकर को देखूं। Manoj Bajpayee likes to wear floral printed shirts as well, and that continues even from Swabiman days. Is there a choice that you make no, deliberately or see, conscious? that Bhikkhu Mahatre's costume was, completely my interpretation. And I sourced all the clothes. I was given, That was as much my yeah, guess. I was given few grants to buy my own costume, and I designed it. I thought about it. But Prabhakar's jackets are very floral, and he stays in South India, in one of the small towns in South Correct. India. And also the backs, Abhishek Chaubey thought that, he's somebody he's always, kind of, he thinks of himself as one of the South India heroes, Right. like Rajnikant ji and M.G. Ramachandran and Shivaji Ganesh. तो वो गोल्ड किचन वहीं से आई सब है? वहीं से सारा कुछ है. So the inspiration was from there. So the backstory matters a lot when you are Correct. giving an interpretation to a character. Right. Yeah. And when I look back, even at Arakshan, or for that matter, let's say Rajniti as well, your costumes are very well accustomed to showing you your character, very strong Right. character from Bihar as well. लेकिन जब हम आरक्षण पे आते हैं तो एक वैसे सवाल पूछ रहा हूँ, you may skip it if you feel like, नहीं. that I feel that caste census today requires, Mr. Bajpayee, more debate, more consensus, more discussion than just the policy implementation कि ओबीसी को उतना दे दिया जाए, ओबीसी की रिजर्वेशन इतनी हो, एससी एसटी की उतनी हो। क्योंकि मैंने ओबीसी पे रिपोर्ट बहुत किया, चाहे वो यूपी के मौर्याज हों या यादव्स हों या नॉन। Right. तो आपको लगता है कि वो आपके भी जहन में कहीं ना कहीं उस समय बचपन मेरी में आती थी? आपने मुझे ना चौका मार दिया अभी. मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ कि कास्ट कंसेंसस पे बात करना शुरू कर दूं. मेरी समझ और समझदारी बहुत छोटी है इस मामले में. और जहाँ तक बात है, आई पर्सनली फील दैट द पीपल ऑन टॉप are far more wiser and far more intelligent, far more experienced to decide about it. I have, anything that I would say uh, will spark a lot of controversy. Why? Because, it will be coming from a very less informed brain at this point of time. Right. So we will continue to wrap up this Right. interview with some rapid fire questions as well, Right. and also some trivia that you may want to answer as well. The 3 OTT series and the 3 films in the sequence that you always want people to watch and you remember by heart of your own performances today. OTT. OTT series, I've been part of only 2 series actually. I don't even have a third one. The Family Man, Killer Soup, and both of them are cult. So, you can't miss it. Film? And film, definitely you must watch Bhosle first, and then you should watch Joram. Then you should watch Banda and Gulmohar. Gulmohar you should not miss, I would say. It's a classic. Correct. Do you remember actually ये डायलॉग किसका है? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए। सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं. Which movie? Shoot out at Wadala. आसमां को के थूकने वाले को शायद ये पता नहीं कि पलट के थूक शायद उनके मुंह पे चेहरे पे गिरेगी। अब राजनीति. या आप जीरो हैं, जीरो थे, जीरो रहे। आरक्षण. जिंदगी भी एक अजीब रोड की तरह। आई विल लीव इट टू यू। जिंदगी भी एक रोड की तरह से है, कब कहाँ किससे मुलाकात हो जाए पता नहीं. 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस रात की बात बनेगी. Which movie? जुबेदा. Amazing. And few questions which I actually want to ask you as a trivia. Name 2 actors from Bihar who in the last 30 to 40 years or even before have done incredibly well. You compare yourself to, or you found themselves as your heroes, one of whom has actually went on to become a politician. So Shatruji has shown us the light that a person, residing in Bihar could make it big, could really realize his dream. Okay, that was one thing. Second is Dr. Rajendra Prasad, our first president. Right. Right. So these 2 personalities have always, and third one was Ramdhari Singh Dinkar, whose poems I keep reciting. Still? I always recite. I always, whenever they, make a request, I get up
poem and I recited. Two female leads, you have worked twice in the film industry, and you actually remember their roles aside you as much as you did and shown in that movie. One is Konkana in Killer Soup. She's fabulous. And second is Tabu in film called Missing, which many people missed it, but they can always catch it on Amazon. Tabu is fantastic in that film. एक जब मैं ट्विटर पे और फेसबुक पे जब जा रहा था तो लोगों से सवाल पूछा कि क्या पूछा जाए, तो उन्होंने कहा ये ज़रूर पूछिए मनोज जी से कि चाहे वो स्पेशल 26 हो, भीखू मात्रे हो या उससे पहले की फिल्में हो, मनोज जी की हंसी का जो अंदाज है ना, स्पेशल 26 में भी इतने भरपूर डायलॉग से भरे हुए कॉप को भी हंसी आ जाती है सीबीआई के, तो वो क्या है कि राज के आप हंसते बड़ा खुल के हैं, नॉक करते और मिला के घर पे भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, चाहे वो भीखू मात्रे हो, थप्पड़ मारते हुए भी वो हंसता है शेफाली शाह को, और जब यहाँ पे आती है तो वो राज है क्या क्या बड़ा खुल के हंसते हैं, बड़े कम एक्टर है जो इतना खुल के ग्रिन, जो रॉकस हम कहते हैं, जैसे एक रॉकस ग्रिन है। ओके, नहीं परफॉर्मेंस तो जो होती है वो उसमें कैरेक्टराइजेशन होता है, बैक स्टोरी होती है, कई सारे कारण होते हैं उस किरदार के हंसने के। मैं अपने जीवन में हंसता इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं जब आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपकी कंपनी को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और आपको सुन रहा हूँ। मेरे अंदर में कोई फिल्टर नहीं है, ना मुझे इस बात की परवाह है कि मैं हंसता हुआ या टेढ़ा होता हुआ कैसा दिखूंगा। मैं जैसा भी दिखूंगा हंसता हुआ दिखूंगा। मेरे दिमाग में हमेशा इवन की किलर सूप में भी आप बड़ा जबरदस्त हंसे हैं, और इवन की जब लड़ाई भी हो रही होती है उससे पहले भी आप लोग थोड़ा सा हंसते हैं, फिर खांसते भी हैं, और फिर वो एक किसिंग का सीन है, बड़ा इंटेंस सीन है, वो भी आपने उसमें उससे पहले हंसते हुए भी निभाया। तो मैं, ये लोगों ने पूछा, और एक बस आखिरी सवाल है बिफोर वी रैप दिस, व्हिच इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव आइटम एंड द एक्सपेंसिव आइटम एट योर पोजेशन दैट यू ऑलवेज चेरिश? Ron, I personally feel that whatever expensive that I have is not to be cherished. Materialism is something that I don't enjoy that much. It will go when we depart. It's something that momentary. Very very momentary. We saw a car and said, since I can afford it, I buy it. We see a car, I can't afford to buy it. I can't buy it. In both the cases, it doesn't give me too much happiness and too much sadness. पर कोई ख्वाहिश है जो बैंडिट क्वीन से लेके अभी तक रह गई, जो पूरी नहीं हुई और अब पूरी करनी है कभी? मुझे ख्वाहिश मेरी तो एक ही है, मैं काश कि कोई मैं थिएटर फिल्म इंस्टीट्यूट खोल पाता, लेकिन मेरे पास उतना पैसा है नहीं। लेकिन मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा है कि मैं अपना अंतिम समय जो है उस तरह के इंस्टीट्यूट में गुजारूं जो आपने सीखा। हाँ, जो सीखा वो बच्चों को सिखाते हुए या उस तरह के टीचर्स को लेके आते हुए कि वो लोग सिखाएं और मैं उसी कैंपस में घूमता रहूं। मेरी ये बड़ी इच्छा है। No desire to earn a Rajya Sabha ticket or a nomination or I'm not a political person at all. Correct. I'm not at all. I have no political ambition. I have never had the ख्वाहिश of power. Right. मुझे बिहार वगैरह जाता हूँ या कहीं बाहर शूटिंग करने जाता हूँ तो लाल बत्ती की गाड़ी देते हैं, मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता है मुझे। लेकिन प्रशासन कहता है कि ये फिर उठ के इंस्पेक्टर समर प्रताप आ जाता है। नहीं, मुझे डिस्कम्फर्ट इस बात से होती है कि मैं कहीं भी ढाबे पे रोक के नहीं खा सकता हूँ खाना, या कोई दुकान अच्छी लग गई तो रुक गए। They will mob you. तो नहीं, स्कॉट मिल जाता है तो मैं उतर नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब तक आप रुके फिर स्कॉट कहीं और चला जाता है, कंफ्यूजन फैल जाता है। लेकिन मुझे पावर की ख्वाहिश नहीं है। Right. मुझे एक हद तक ये है कि मेरी ज़िंदगी आराम से गुजरे, इसके लिए उतना पैसा मुझे कमाना है, बस आराम से गुजरे। मुझे कोई बड़ा अरबोपति बनने की ख्वाहिश नहीं है। मुझे अभिनय करने में बहुत मज़ा आता है और मुझे अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताने में बहुत मजा आता है। Excellent, sir. On this pleasure note, sir, I'll thank you so much. Thank you. And we wish Manoj Bajpayee incredible journey to continue for the roaring triumphs that you have scaled for this country and for the icon that you have become for us in the national capital of India, and also for those people who love you very fondly in Mumbai, to even the Konkan belt, and also in the South India from this movie as well. Again, many thanks, sir, and all the best. Thank you, Mr. Thank you very much. Thank you.